हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ये सीबीसीएस का है। ये है यूनिट 3। जी हाँ गाइस, यूनिट 1, यूनिट 5 एंड यूनिट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मैं सारे के सारे पीडीएफ आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो ये फाइनल में आ चुका ऑलरेडी 2 मार्क का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ऑर्गेनाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर्ड विद ब्रिंगिंग टुगेदर various resources such as physical, financial, human, and establishing relationship among them for the accomplishment of specific objectives of the organization. क्वेश्चन नंबर बी देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो काफ़ी बड़ा है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से लिखिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला देखिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर सेटिंग अप ऑफ ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोटल एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस begins with identification of total activities in an organization. First off, at very initial stage of organizing, a manager must identify the total tasks involved for achieving the objective. दूसरा देखिए नंबर 2, डिवीजन ऑफ टोटल एक्टिविटीज। वंस द एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड, दोज शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस मैनेजेबल फंक्शंस फर्स्ट सो दैट दीज कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। स्टेप 3 देखिए, अपॉइंटिंग सुइटेबल पर्सन्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन ऑर्गेनाइजिंग इज टू अपॉइंट सुइटेबल पर्सन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दोज आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड एक्टिविटीज। स्टेप 4 देखिए, असाइनिंग एंड डेलीगेशन ऑथोरिटी, delegation of authority. In this step, duties are assigned to all the appointed persons because a person will be able to perform his duty only when is given adequate authority required for that job. उसके बाद नंबर 5 देखिए, स्टेप 5 इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। दिस इज द फाइनल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग विच इज डन टू एंश्योर दैट फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर a particular purpose are grouped according to their relation to the another. First off, it helps in reducing efficiency and conflicts between the different working individuals and department of the enterprise. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर अच्छी तरीके से लिखिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंप्लाइज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू ए सुपीरियर। फुल स्टॉप, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल व्हिच एन एग्जीक्यूटिव कैन मैनेज और सुपरवाइज इफेक्टिवली। फुल स्टॉप, देयर इज यूजुअली ए लिमिट टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट ईच executive can efficiently supervise. Full stop. The larger the number of subordinates reporting directly to an executive, the more difficult it is for him to supervise and coordinate their activities effectively. Full stop. On the other hand, if the number of subordinates is too small, full use may not be made of the executive's abilities. तो ये रहे आज के लिए, बस इतना ही। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।